ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पादेन वाचम् मालं शरीरस्य चावदकेन योपाकरोत्तं प्रबोरं मुनीनम् पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Ragapam, when it's little more, get later Achara Bhavan. अच्छा, लास्ट डे हम लोग कौन सा टॉपिक चर्चा कर रहे थे? We were discussing topic 2.4. We will start from 2.5, page 204. Two 205. Page 204. Okay. We have completed now 2.5. So we will start from 2.5. Okay. Concept of healthy living in Bhagavad Gita. Ahara, Vihara, Achara, Vichara. Again, concept of healthy living in Bhagavad Gita. भगवत गीता के अनुसार हेल्दी लिविंग क्या है वो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आचार विचार, आहार विहार, आचार विचार, आहार विहार, आचार विचार, सॉरी। तो ये जो श्लोक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः। यहाँ पे युक्ताहार विहारस्य, जो बिहार है, आहार तो समझ में आता है, बिहार क्या है? So entertainment. बिहारस्य, हाँ बिहारस्य, बिहारस्य के साथ बिहार, आचार और विचार, ये तीनों चीज ऐड होते हैं। आहार हम लोग जानते हैं दैट इज, जो फूड है दैट इज वो 3 टाइप का है और उसी के हिसाब से हम लोगों को भोजन भी करना चाहिए। और उस हिसाब से अगर भोजन करते हैं दैट इज, कोई एक व्यक्ति वो सामान्य रूप से वो रह सकते हैं, अपना जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। अदरवाइज दे कुड नॉट एबल टू डू। Who is model in his habit of eating, sleeping, working, recreation can mitigate all material pain by practicing the yoga. Material pain, what is this material pain? जो भी हम लोग इन डेली लाइफ में जो हम लोग अभ्यास करते हैं,
दैट इज ऑल अबाउट बैलेंस। अगर कोई व्यक्ति वो बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, सो देयर विल बी ए प्रॉब्लम। ऑल द टाइम वी नीड टू प्रैक्टिस इन सच वे, और प्रैक्टिस, और बोल सकते हैं कि वी शुड बी इन दैट वे। भोजन उसमें बहुत ज्यादा कोई कर नहीं सकते हैं और ना कम कर सकते हैं। और किसी को भी हम लोग अगर उत्साहित या प्रोत्साहित भी करते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा अ, उसमें भोजन वो कर ले। जो जैसे सिचुएशन में वो हैं, उसी सिचुएशन से उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, एंड दैट शुड बी मॉडरेट। क्यों ये बोला जा गया है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा अगर भोजन करते हैं, तो वो उनके लिए भी वो बहुत नुकसानदायक है। कोई व्यक्ति अगर बहुत कम भोजन करते हैं, वो भी उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो फिर शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा। सो इसलिए उनको कभी भी हम लोगों को ये प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा भोजन करे या बहुत कम भोजन करे। तो इट नीड टू बी रेगुलेट। देन Yuktahar Viharasya means one who is eating and movement are regulated. Ahar, little food, means all that is gathered in form of food, include mental food as well as the impression we draw through our sense organs and the people from we associate with. Vihara means moving around. Yukta chest refers to one whose effort, chesta, are moderate, who does not overexert. Karmishu refers to one who does work but not work aholic. Similarly, Yukta Sapna Bodhasya refers to one who sleeps with sapna and wakefulness are moderate. Abodha are moderate. Such person can overcome all worldly pains and sorrows. क्यों बोला गया है कि वो सारा दुख को वो हरण कर सकते हैं या अपना जीवन से वो दूर कर सकते हैं? बिकॉज इफ दे आर प्रैक्टिसिंग इन सच वे, तो वो कभी भी अपना दुख को पास में ही नहीं आने देंगे, और उनका जीवन में कभी वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगा ही नहीं। दैट्स वाई युक्त सपन बोधश्य, अबोध मतलब जो अवेकफुलनेस है, वो भी मॉडरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा हम योगी बन गए, सो आई विल बी awake all the time. No, we need to sleep, we need to take rest. यानी और बिहार से जो आचार, अ, बिहार आचार विचार एंड व्यवहार, विचार मतलब जो थॉट प्रोसेस है, दैट शुड बी रेगुलेटेड ऑल्सो। हम लोग ऐसे कोई सोच भी नहीं सकते हैं यार, वी आर नॉट अलाउड टू थिंक इन सच वे कि हम बहुत मतलब चिंता में हैं।
ये भी नहीं होना चाहिए। आचार आचरण जो होगा वो भी मॉडरेट। मॉडरेट आचरण मतलब किसी से भी जब मिलते हैं, किसी से भी जब बात करते हैं, तो दैट नीड टू बी रेगुलेटेड। वो कभी इरेगुलर नहीं होना चाहिए। देन विचार। विचार मतलब जो भी वो सोचेंगे, जो भी वो अ, लोगों से भी मिलेंगे, उनका आचरण और उनका विचरण। विचरण मतलब जिस लोगों से वो मिलते हैं, दैट्स नीड टू बी रेगुलेटेड ऑल्सो। वो भी रेगुलेटेड होना चाहिए। वो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हर एक लोग से बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति से वो अ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट नीड टू बी रेगुलेटेड ऑल्सो। देन युग तो यही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता। मतलब भगवान श्री कृष्ण उनको बोल रहे हैं अर्जुन को कि ऑल द टाइम यू नीड टू फुलफिल दैट। आप किसी से भी ऐसे नहीं करेंगे कि जो आपको कोई भी दुविधा में आप पड़ जाओ, कोई भी सिचुएशन में आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट नीड टू बी रेगुलेटेड आल्सो। Any question from this part? No, sir. देन 2.6 में हम लोग प्रवेश करेंगे। दैट इज इंट्रोडक्शन एंड हाईलाइट ऑफ योगा वशिष्ठ। डेफिनेशन ऑफ योगा एंड देयर रिलेवेंस इन योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में क्या बताया गया है, तो दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड ऑल्सो। योग वशिष्ठ written by Sage Valmiki in the spiritual teaching imparted by Sage Vasishtha to Sri Rama in Balkand of the Ramayana. There is also reference that Rama received spiritual instructions and guidance from his Guru Vasishtha, while Ramayana relates Sri Rama's adventure and the meaning of different stages of his life. Yoga Vasishtha relates to the teaching which he receives and describes the different chapters in his spiritual evolution. Yoga Vasishtha is known as the Maha Ramayana, the Uttar Ramayana, and the Vasishtha Ramayana. We can also call it the behind the scenes Ramayana because it describes how Rama's knowledge, wisdom, and understanding evolved and progressed throughout the different stages of his life. Yoga Vasishtha in an elaborate work consisting of 32,000 verses and 64,000 lines. It has been divided into 6 chapters, which are different stages of spiritual evolution
in the life of Sri Ram. The chapters are called Prakarans. The first chapter is Vairagya Prakaran, which Sri Rama experiences very deep and intense dissipation and distaste for all worldly objects and pleasure. First है Vairagya Prakaran. Although in Rama's case, the desire for worldly objects was never described as being very intense, still it is the first stage of Sri Rama's spiritual evolution and the first requirement in spiritual life. The second chapter is Mumuksha Prakaran, which describes the intense desire of for self-realization that Sri Rama experiences. After achieving Vairagya, after attaining the state of being different from the world, of not being involved but being more of an observer, then the next is changing the quality of desire from worldly to spiritual. That is second stage of Rama's evolution. The third chapter is Utpatti Prakaran, which is Sri Rama learns from his guru the origins of the world, it depending the understanding of why we get caught up and involved with worldly object and pleasure, and how those outstanding objects are identified in the mind. The fourth chapter is Sthiti Ramayana, in which, after having attained that firm understanding of the origin of the world process, Sri Rama sustained himself in the self in Brahman. That fifth chapter is Upasana Prakarana, which describes the deep space that emerge from having attained the spiritual enlightenment. The sixth chapter is Nirvana Prakaran, which is the final liberation. And what is the ultimate teaching? That is, wake up from the dream. मतलब इसमें waking up from dream, मतलब स्वप्न से जागना, वही ultimate. The main themes of Yoga Vasishtha is that soul is undergoing a dream from which it must awake. The dream represent our association and identification with the world, that the fact that is described as being a dream means that whatever is in the in it has to be false. Nothing in a dream can be true. Wake up from that dream is the ultimate goal, self-realization. Yoga Vasishtha have been written not as straight dialogue between Sage Vasishtha and Sri Rama, but in the form of a story within a story. It is not a standard scriptural textbook. Our lives are so also rather like a story within a story. For example, a desire arises for a particular object, then there is a pursuit to obtain that object. If the object is attained, there is an elation, a happiness that does not last very long. As we know, then there is a further desire for what we consider to be a better object. Again, there is another pursuit after that object. But if the object is not obtained, there is frustration, anger, loss of mental balance, and then all of a sudden, out of nowhere, guilt arises. Why was I pursuing this object in the first place? But the desire for that object still remains along with the guilt. The mind
that is feeling guilty for pursuing that object is the same mind that wants to obtain that object. So there is a mental conflict, confusion, and no clarity. तो यही होता है कि जब हम लोग कुछ एक चाहते हैं तो उनके अंदर में वो चाहने के बाद फिर अ, दूसरा और एक चाहत आ जाते हैं, दूसरा एक डिजायर आ जाते हैं। तो वो एक डिजायर से दूसरा डिजायर, दूसरे से तीसरा, ऐसे ही चलते रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे ऐसे ही अपना मन बिखरते हुए चलते हैं। एंड दैट्स व्हाई दैट इज a very significant things. The first chapter has been called Vairagya Prakarana because until one cuts that identification with the desire for worldly objects, that fogginess will remain. Not until the fogginess disappear will mental clarity prevail and will one be able to evaluate, analyze, and reflect on what the true aspiration is. While we are involved in the desire, we cannot see what the real aspiration are and what we really want to obtain. And there will be no real transformation in the quality of desire. That is why Vairagya Prakarana has been described as the first chapter of in Sri Rama's spiritual evolution. And of course, it applies to all aspects. Once there is a clarity, it initiates the second chapter, Mumuksha Prakaran, with changing the quality of desire to a higher nature, with changing the quality of that desire to a higher nature, which is self realization. जैसे इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज वैराग्य प्रकरण। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई विषय से अगर वैराग्य उनके अंदर अंदर में नहीं होता है तब तक वो नेक्स्ट में नहीं जा सकते हैं। और जब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है तब जाके वो फिर नेक्स्ट प्रवेश करते हैं, दैट इज वैराग्य। ठीक है, वैराग्य की तरफ वो जा सकते हैं। क्योंकि वैराग्य से वो मुमुक्ष मतलब जो अल्टीमेट है डिजायर हायर नेचर और विच इज सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ तो अपना मन को वो लगा सकते हैं। वैराग्य करना ही है, उसके बाद कोई मुमुक्ष मुमुक्षत्व और बोल सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ अपना मन को लगा सकते हैं। अदरवाइज दे कुड नॉट एबल टू डू दैट। Sri Rama describes in this in a very beautiful and simple way. If you pour water into a bucket made out of straw, what will happen? The water will not remain in the bucket. All the water will permeate through the basket. अच्छा, 1 minute.
Okay, welcome. The pouring of water into bucket represent that the effort, the purushartha that one makes in one's life to obtain that something. But what happens? The fact that the water permeates through the bucket and leaves it empty means no matter how much water you pour in, no matter how deep you go in that dream, the bucket will always remain empty. That is the transitory, sort of and temporary nature of happiness and contentment derived from worldly object. मतलब बोल रहे हैं कि एक बाकेट ऐसे या कोई एक जिसमें बाकेट मतलब कोई एक जगह ले लेते हैं और जिसमें छेद है, लेकिन उसमें आप कितना भी पानी और कितना भी अच्छा काम करते रहोगे, वो पानी वहां से निकल ही जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन वहां पे वो बाकेट को अगर ठीक करना है तो क्या करना है? डिजायर, वो डिजायर को खत्म करना है। डिजायर अगर खत्म करते हैं तो आप कुछ भी करो, वो आपका पानी जितना भी रहेगा वो आपको ढा मतलब उसमें बाकेट में ढालना मतलब रखना ही नहीं है। तो ऑलवेज इट विल बी। और बाकेट अगर ठीक हो जाता है, मन अगर ठीक हो जाते हैं, मन में अगर छेद नहीं है, तब वो जितना भी मिलेगा उससे ही वो पूर्ण हो जाएगा। Imagine you are having a nightmare in which people are chasing you and you are running away. Suddenly, the road split into two. One side people are still chasing, so you say, "I would better not to go that direction. I cannot go back." So that do so what to do? What do you do? You either run the right and continue the running in the same circle, or you simply wake up and put an end to the dream. This wake up from dream, which is described in Yoga Vasishtha, is the opening of the third eye. The third eye is a symbol which represent discrimination and wisdom. It is the discrimination and wisdom which ultimately lead one to the experience of vairagya or dispassion. मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति का अगर वो अगर स्वप्न में ऐसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब कुछ लोग उनको को आ, भगा रहे हैं, मतलब उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो भाग रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद देखा कि और एक दूसरे दो रास्ते में वो बढ़ गए। एक में देख रहे हैं कुछ लोग वहां से उस साइड से भी आ रहे हैं और एक रास्ता खुला है, लेकिन वो उसी रास्ते से फिर वो दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते ठीक देखेंगे कि उसी जगह पे वो पहुंच गए जहाँ पे फिर लोग उनको चेज कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग, वो हम लोगों के साथ ऑलवेज होता है। इससे एंड करने का एकमात्र उपाय है नींद से जाग जाना। नींद से जाग जाना मतलब जैसे सेल्फ रियलाइजेशन में कोई पहुंच जाते हैं तो दैट इज द एंड। और भागेंगे नहीं। वो और जैसे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स है, इनके पीछे उनका कोई अ, संबंध ही नहीं रहेगा, एंड विच इज अल्टीमेट। Discrimination means uh, what is right and what is wrong. Being able to differentiate and to guide one's life and effort towards something that is everlasting, not something temporary, which will disappear the moment you touch it. Applying that discrimination then became a dispassion. Dispassion is not something that can be applied as an intellectual concept. Rather, it is a gradual process of transmission of the mind and of the nature of the mind.
transformation of the desire, and the quality of this desire. So, Yoga Vasishtha described the spiritual aim as being the wake up from the dream that we are going through. मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मतलब कौन सा चीज सच है और कौन सा झूठ है, इस सच और झूठ को पकड़ना। जब कोई व्यक्ति सच और झूठ को पकड़ लेते हैं तब वो और कोई प्रॉब्लम में नहीं रहता है। ऑलवेज ही और सी कैन बी इन अल्टीमेट हैप्पीनेस में वो रह सकते हैं। और वो नींद से जागना मतलब अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट इज देयर इज अ स्टोरी, जो एक स्टोरी के अंदर में और एक स्टोरी जो बताया गया था ना, और दैट इज वो स्टोरी क्या है, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुतीक्ष्ण एंड अगस्त। The first story in the Vairagya Prakarana does not begin with the sage Vasishtha speaking to Sri Rama, but with a very humble and modest Brahmin named Sutikshna who has gone to his guru, sage Agastya, for spiritual guidance. When Agastya, knowing his disciple very well, asks him the cause of his confusion and grief, Sutikshna said, "Tell me, is it the performance of one's duty that will lead one's to liberation, to nirvana, to moksha, or it is renunciation of everything, going to the Himalaya and forgetting everybody and everything?" मतलब उन्होंने पूछा कि कोई एक व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब और वो उनका जो अल्टीमेट उद्देश्य है जैसे लिबरेशन, निर्वाण और मोक्ष, उनको प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? उनको हिमालय में चले जाना चाहिए और सबको और सब कुछ भूल जाना चाहिए? सेज अगस्त्य रिप्लाइड, अगस्त्य उन्होंने बोला, जस्ट एज ए बर्ड फ्लाइज ऑन टू विंग्स, इन द सेम वे द एस्पिरेंट फ्लाइज अप टू द गोल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, टू लिबरेशन ऑन द टू विंग्स ऑफ कर्मा एंड विजडम। मतलब कर्म और ज्ञान के पाखा में या विंग्स में भर करते हुए उनको आगे जाना है। सो इट इज नीदर और नाइदर one nor the other, but blending of the two. That is the art which one has to learn to evolve in spiritual life. तो और ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ अगर देखना है तो ये ज्ञान और कर्म के द्वारा ही उनको आगे बढ़ना है। Seeing that Sutikshna was still confused, Agastya said, "I will tell you another story to help you understand better." और फिर उनको बोला कि और एक स्टोरी हम आपको बताते हैं इनको समझने के लिए। अहिनिवेश एंड Karunya. The second story is about Karunya and his father Agnivesh. Once upon a time, there was a boy named Karuna. He went to the Gurukul at an early age, mastered the Vedas and Puranas, and became a very knowledgeable person. After finishing his training, he returned to his father's home. Suddenly, one day, he too became depressed and fall into a stage of grief. Agnivesha went to him and said, "Tell me,
the cause of your grief. Karuna replied, I have been studying all this time, but still I have one question. It is mentioned in the scripture that one will attain liberation, that one will free oneself from the cycle of birth and death through the performance one's duties. But at the same time, it says that only through renunciation will one attain his freedom. So, what should one do? Agnivesh replied, I will tell you a story which will help you to understand this point perfectly. इसका मतलब है जैसे अ, जैसे करुण और उनका पिता अग्निवेश, इनका स्टोरी यहाँ पे बताया गया। जैसे वो गुरुकुल में रहते हुए वेद पुराण सब कुछ पढ़ाई किए, फिर आ, भी करुणा के अंदर में मन में दुख था। अग्निवेश उनको पूछा कि तुम्हारे अंदर में क्या दुख है। वो बोला कि हम इतना दिन पढ़ाई किए हैं तो भी मेरे अंदर में एक ही क्वेश्चन है कि कोई, जैसे धर्म ग्रंथ में या ग्रंथ में उल्लेख है कि कोई एक व्यक्ति वो मुक्ति लाभ ही उनका अल्टीमेट है, जो व्यक्ति मतलब उनका कर्तव्य है और उनके कर्तव्य का पालन के द्वारा उनका जन्म और मृत्यु से वो खुद को मुक्त करेंगे। और वो पूछे कि सिर्फ त्याग के द्वारा ही क्या ये मिल सकता है? ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति क्या सिर्फ त्याग के द्वारा ही मिल सकते हैं? तो फिर अग्निवेश बोला कि इनको समझाने के लिए तुमको एक मैं स्टोरी बताता हूँ, और वो है सुरुचि एंड देवदत्ता। So there is a third story, and the dialogue between sage Vasishtha and Sri Rama has still not yet begun. Agnivesha begins, once upon a time a beautiful damsel named Suruchi was sitting on a mountain peak in the Himalaya, reflecting on life. All of a sudden, she saw a messenger of Lord Indra flying by. So she called him and asked why you are going. He replied, that is a very good question. Let me tell you a story. Think. सुरुचि फिर किसको क्वेश्चन किया? देवदत्ता को। जो देवदत्ता जो स्वर्ग का एक पंछी है, अ, और फिर उनको बोला कि अच्छा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि इनको समझा मतलब वो एक कहानी है, उस कहानी हम आपको बताते हैं। फिर वो स्टोरी क्या है? वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड अरिस्टोनमी। After having performed his kingly duty and having ruled the kingdom with authority according to the scriptures, he had retired and passed on his kingdom to his son. For hundreds and hundreds of years, he had practiced severe austerities and moderations in the forest. Lord Indra was so impressed that he sent his messenger Devdatta to invite Aristonomy to the heavens. So Devdatta went off in a chariot full of most beautiful damsel and the most learned scholar to invite King Aristonomy on a first-class flight to the heavens. Devdatta arrives in the forest where Aristonomy was practicing his meditation and pass on Indra's invitation. Aristonomy
understood that he was being offered a reward for his good deeds and fruits of his karma. He said, "Tell me, what kind of fruits I will enjoy from this karma in the heaven?" Devdatta replied, "According to karmas one has performed in one's life, the quality of the fruit will vary. Due to this variety, there is a jealousy amongst the enjoyer of the fruits. Therefore, once the bonus is consumed, you have to go back and pass through another stage of birth." King Aristome said firmly, "No, I am not going with you. I am performing the austerities and experience everlasting happiness and peace within. And now that souls not go through the same things, therefore I am not going with you." ये भी बहुत अ, अच्छा स्टोरी है। जैसे एरिस्टो में एक राजा थे, वो बहुत दिन वो राज्य वो शासन किए हैं। शासन करने के बाद अ, वो सारा कुछ राजपाट उनका बेटा को समर्पण कर दिया। फिर वो जंगल में चले गए और वहां पे एक कठोर तपस्या में वो मग्न हो गए, तपस्या ध्यान में। फिर वो देखते हुए इंद्र, राजा इंद्र, वो बहुत खुश हुए, देवराज इंद्र। फिर उनको देवदत्त को भेजे कि आप उनको लेके आओ स्वर्ग में। तो फिर वो गए। फिर देवदत्ता को पूछा कि मैं अगर जाता हूँ वहां पे तो कैसा कर्म फल से कैसा मैं फल भोग करूंगा। तो बोला कि आप जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार आपको अ, कर्म फल आपको भोग आपका होगा। लेकिन जो भोग करते हैं अ, तो उसमें गुण रहेगा। फिर उस गुण के कारण आपका मन विचलित होगा, फिर आपके मन में जेलसी होगा, ईर्षा होगा। और ईर्ष्या के बाद जब आपका ये कर्म फल, जब ये जो आप संचय किए हैं वो जब खत्म हो जाएगा, फिर आपको एक मनुष्य की तरह आपको जन्म लेना होगा। फिर से आपको फिर से आपको एक मनुष्य की तरह जन्म लेना लेना होगा, फिर और एक जीवन आपको बिताना होगा। तब वो अरिस्टोटमी बोला कि नहीं, तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मुझे जो तपस्या के द्वारा जो मैं अनंत सुख का मैं अनुभव किया, और फिर से मैं वैसे ही पुनर्जन्म के द्वारा हम नहीं गुजरना चाहते हैं। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग विथ यू। Then Aristotle and Valmiki. So Devdatta returned in an empty flight, first class, and told Lord Indra what Aristotle had said. Lord Indra said, go back and talk him to sage Valmiki. Tell sage Valmiki to instruct Aristotle in spiritual knowledge and to guide him and lead him towards liberation, which is the reason why he is here. Devdatta took King Aristome to sage Valmiki, and when Aristome saw Valmiki, he understood that he had come to right place. He said, "I wish you to instruct and guide me so that I can become free from this sorrow and miseries, which I am unable to separate myself from alone." At this point, Sage Valmiki begins to tell King Aristome the story of Yoga Vasishtha, the dialogue between Sage Vasishtha and Sri Ram. तब वाल्मीकि एरिस्टोनमी को बोल रहा है कि सेज वशिष्ठ, मतलब ऋषि वशिष्ठ उनका शिष्य श्री राम को कैसे इंस्ट्रक्ट किए थे और इस बारे में क्या बताए थे। फ्रॉम द इंटेलेक्ट टू इंट्यूशन, so the
introduction to Vairagya Prakaran constant many stories within the story. These stories have twofold meaning. There is always a superficial meaning and at another level a more spiritual and deeper understanding. In the first story, Sutikshna approaches Agastya for spiritual guidance. Sutikshna means subtle, sharp, and Agastya means the effluent sun. The movement of Sutikshna towards sage Agastya represent the movement of the intellect towards intuitions. An aspirant with the ability to move from intellect to intuitions is considered to be the highest type of aspirant. The scripture says that intellect is considered to be a barrier in spiritual life, but this has to be understood properly as the absence of intellect is not the sky to overcome this barrier. The key has to be something associated with intellect. Intellect begins with the letter I. The purpose of intellect also serve I. So, if intellect is not the barrier directly, it is this I-ness associated with intellect which becomes the barrier intellect and ego. I-ness have a very intimate relationship, even intimate than relationship between a husband and wife. The way to transcend this barrier, therefore, not create an absence of intellect, but change of purpose and application of intellect. Intense applying the intellect for ourselves, we apply intellect for others. जैसे यहाँ पे जो एक के अंदर में और एक स्टोरी है, इसमें ऑलवेज यही समझाते हैं कि आईनेस मतलब जो भी हमारा बुद्धि वो मुझसे ही शुरू होता है, मतलब व्हाट आई विल गेन, व्हाट आई विल लूज, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन कभी आईनेस के अंदर कुछ भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जो बुद्धि और जो अहंकार ये सिर्फ आईनेस मतलब मुझसे ही जुड़ा हुआ रहता है, और जब ये सिर्फ मुझसे ही जुड़ा हुआ रहता है तब देयर इज ए प्रॉब्लम। तो ऑलवेज हम लोग यही सोचते हैं कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, और जब एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू मी तब जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तब जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। देन क्योंकि हम कभी भी खुद को मतलब बुद्धि और अहंकार को कभी अलग नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बोथ आर सिंगल, बट बोथ आर नॉट सिंगल, दोनों कभी एक हो ही नहीं सकता है। The guru disciple relationship is described as a way to understand this barrier. In this story, there is a guru and disciple. In the guru disciple relationship, there is a acceptance, faith, and surrender. One is undergoing training, one's in intuition
there is ability to move from intellect to intuition is considered to be quality of higher type of aspirants, because while letting go of family and position is not considered so difficult, let, letting go of that I-ness is considered to be uh, one of the toughest and rarest ability. वो बहुत टफ होता है कि वो आईनेस को हटा। जो इंट्यूशन यहाँ पे बताया गया, दैट इज वो अंतर्दृष्टि, वो जो कोई भी हम लोग सोचते हैं कि अच्छा हमारे अंदर में क्या है, व्हाट वी आर, व्हाट वी आर एक्चुअली, ये जो जब हम लोग सोचते हैं या देखते हैं फ्रॉम द गुरु के पास, या जो हायर स्पिरिचुअल नॉलेज या उसके द्वारा जो प्राप्त होता है, उसमें देखते हैं कि हाईएस्ट है कि जो जो जीवन से अहंकार या खुद को ओमिट कर देना, खुद को हटा देना, बट दैट इज नॉट सो इजी टू डू। दैट इज इसीलिए बोला जा रहा है कि आईनेस इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द टाफेस्ट एंड रेयरेस्ट एबिलिटी। मतलब आईनेस को हटाना ये सबसे कठिन काम है। Purification of the mind, the second story between Karuna and Agnivesha. Karuna means one who is full of grief, confusion, and Agnivesha is embodied of fire. The movement of Agnivesha towards Karuna represent the need of the chitta to be purified by super consciousness, the need of the mind to be purified through Raju. Karunya is considered to the second best type of aspirant on the spiritual path. In the first story, Shutiksna approached Agastha for spiritual guidance, but Agnivisha had to approach Karuna in order to relieve him of this grief and confusion. इस grief and confusion से खुद को दूर करना ही अल्टीमेट है। ओके, एनी क्वेश्चन?
Spiritual inclination. The thought story between Suruchi, a Desmo, and Devdatta, the Lord Indra's divine messenger. Suruchi means good taste. Her calling out to Devdatta is a sign of spiritual inclination, because even though it may have been a mental diversion initially, it becomes the source of her being led to spiritual heights. As Devdatta then tell the story, which eventually leads to the dialogue between Sage Vasishtha and Sri Rama. Suruchi also represent the integration of sentiments required in an aspirant on the path of bhakti. She is considered to be the third best type of aspirant on the spiritual path. द इसमें क्या है, सुरुचि जिसका कोई भी चीज में अच्छा रुचि हो, इसीलिए वो देवदत्ता मतलब जो इंद्र का वाहन है या उसका जो मैसेंजर है उनको पूछा। और यहाँ पे स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है, दैट इज वो मानसिक रूप से क्या सोच रहे हैं, हायर स्पिरिचुअल लेवल पे वो जाना चाहते हैं। एंड यहाँ पे ही सेज वशिष्ठ एंड श्री राम का जो कन्वर्सेशन वो शुरू होता है, ठीक है। वहाँ पे जो भक्ति मार्ग में है, जो सब कुछ समर्पण करते हुए जो रहते हैं, उस रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है। देन फ्रॉम रजस टू सत्व, इन द नेक्स्ट स्टोरी Aristotelian approaches Sage Valmiki not directly, but after having refused from first invitation to the heavens. The movement of Aristotelian towards Valmiki therefore symbolize the movement of Raja to Sattva. Aristotelian represent Rajas and the destroyer of evil, and Valmiki represent the divine purity Sattva. और वहां पे जो एरिस्टनमी है, वो रजगुण का अधिकारी है, क्योंकि वो राजा थे और वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे स्वर्ग में। तो मतलब वो क्या चाहते हैं, वो किसके पास लेके गए उनको ना, वाल्मीकि के पास, देवदत्त। और वाल्मीकि क्या है, वो सत्व गुण का अधिकारी है। तो इसीलिए बोला जा सकता है कि वो रजगुण से सत्व की तरफ वो जा रहे हैं और सत्व की तरह सात्विक रूप से वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। श्री रामा एंड सेज वशिष्ठ, इन द नेक्स्ट स्टोरी रिवेल्ड by Sage Valmiki to Aristonami, Sri Rama represent the embodied divine self, and Sage Vasishtha represent the self in the high state of liberation. This despite the movement of soul towards the self-realization. It is the wake up the soul from the world, which is the theme of Yoga Vasishtha. Sri Rama is the ideal disciple, the best that one can find. In this teaching, Sage Valmiki explains on each and every aspect of spiritual evolution. This story, therefore, are not only stepping stone leading into Yoga Vasishtha, but also describe the different type of aspirant on the spiritual path and the eternal processes and movements they undergo as the personality is transformed. They also emphasize the need for guru-disciple relationship. And this is the end of the स्टोरी। मतलब वहां पे क्या है कि जब वो गुरु के पास जाते हैं, और गुरु एग्जैक्टली एक जो डिवाइन सोल है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्टीमेटली स्पिरिचुअल पाथ में चलना चाहते हैं, वो जैसे एक सिद्ध पुरुष और एक योगी, मतलब गुरु जो उनको सिखाते हैं, दैट इज द अल्टीमेट टीचिंग ऑफ योग वशिष्ठ, जो वशिष्ठ देव श्री राम को सिखाते हैं। Any question?
from this. ठीक है. सो आई थिंक कल एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्लास वो 12 बजे 1 बजे ही होगा. फिर भी हम कंफर्म कर देंगे फॉर द टाइमिंग एंड डू ज्वाइन फॉर दैट सेशन. Sir, after anatomy classes, again our class is 9 p.m. Means this regular session. Yes, sir. No. First complete that anatomy and physiology, then we'll go for this regular session. Okay, Sunday. Otherwise, this. Okay, sir. That means tomorrow we will have class of at 9 p.m. No, there will be no class. Only 1 p.m. for theory, for anatomy and physiology class. Okay, sir. And कल एक वो क्या बोलते हैं मीटिंग भी है. सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन दैट मीटिंग. सर क्या मीटिंग है? सर क्या मीटिंग है? वो देखने एजेंडा भी हम लिख दिए हैं. 3 एजेंडा है. दैट इज वो योगा इदम वाला है, एक कॉन्वोकेशन होगा उसके लिए एक मीटिंग है, और एक ऋषिकेश रिट्रीट के लिए भी मीटिंग है. ओके. सो विल. सर वो नहीं मिला. यस. सर वो मीटिंग वाला है तो हमको व्हाट्सएप नंबर पे नहीं. अच्छा, हम भेज देते हैं तुमको. ठीक है, आई हैव सेंट यू. और वो क्या? ठीक. और वो इंफॉर्मेशन भी मतलब कल इसका लिंक भी मिल जाएगा इन डे टाइम. ठीक है. I will send it, that meeting link also. Okay. Okay, we'll conclude the session with prayers. Okay. It is fine. Keep close your eyes. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Rub your palm. When it's little warm, gently attach your body. Take your own time to open your eyes. Thank you. Thank you. Good night.